यार पता नहीं मैं ऐसी सिचुएशंस में कहाँ से आ जाता हूँ जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है बट अलीगढ़ वॉज वेरी फ्रूटफुल एंड अलीगढ़ के लास्ट डे पे ऑलमोस्ट आसिफ भाई एंड आई went for a dinner along with Sabir, Rashid bhai and everybody else, and I talked to Asif Idris bhai, right? Now, Asif Idris has studied JNU से बहुत अच्छी तरीके से. Then he went to Europe to pursue like a job that he had there. वो काफ़ी ज़्यादा घूमे वहाँ पे. He had a lot of life experiences. Then he came back to Aligarh, set up an education consultancy there. So I'm, talking to him. वो मेरे ख्याल में मेरे साइड में सभी था, सभी के साइड में वो बैठे हुए थे, राइट. And he asks me तुम क्या कर रहे हो, and I said well मेरा इतना दिल नहीं कर रहा है PhD करने का, to be very fair, because मुझे उसका कोई बहुत ज़्यादा tangible outcome नहीं दिख रहा, right. And अगर आपको भी मैं बोलूँ ना कि मुझे PhD का एक बहुत ही अच्छा tangible outcome दिखाएं, at best you're going to be say security, safety, stability, and मुझे वो चाहिए ही नहीं. लाइक आई डो नॉट वॉन्ट टू प्ले इट सेफ. अगर मैं 29 तक कुछ नहीं कर पाया या 30 तक कुछ नहीं कर पाया तब आई वॉन्ट टू प्ले इट सेफ. उससे पहले मैं क्यों सेफ प्ले करूँ? लाइक आई हैव नथिंग टू लूज. क्या होगा ज़्यादा? आई लूज ऑल ऑफ माई नेटवर्थ. फाइन, आई एम स्टिल 22.5. That's the crazy part. I'm still exceptionally young at that point of time. So I do not consider 29 even old, but 29 tak, you start have like some kind of responsibility. People start looking up to you for answers. लेकिन उससे पहले तक like what's the point of playing it safe? So I wanted to play it big, and that's what I explained. And he said तो एक काम करो ना, तुम स्पेन चले जाओ. I was like Spain, and he said yeah, Spain चले जाओ. Go in the program that I had, be a language and cultural tutor, right? And वो internship कर लो. And I said okay, what's the process? And he said well हमारी education consultancy services, we're gonna do it for you. हम तुम्हारा email account वगैरह सब अलग से बना देंगे इसके लिए. And we're going to monitor the emails, we're going to fill out the forms for you. And he did that, and as soon as he did that, I got an interview call. Like all I needed was an IELTS, जो मेरे पास पहले से ही था, thanks to the fact that मैं SSGS scholar था. इसका मतलब मैंने IELTS दे रखा था, and IELTS मेरे पास था, passport मेरे पास था, and that worked. And once that worked, I could finally appear for that interview. एंड आई पेड फॉर दैट इंटरव्यू आज सुबह. सो परसों की बात है ये. एंड आज इंटरव्यू था सुबह एट 9:15 AM, एंड बाय 11 AM रिजल्ट आ चुका था, एंड आई हैड बीन सिलेक्टेड, विच मीन्स दैट नाउ आई कैन गो टू एनी सिटी इन स्पेन एंड टीच इंग्लिश एज एन असिस्टेंट टीचर. चाहे वो कॉलेज में हो सकता है, हाई स्कूल में हो सकता है, एंड दे आर गोइंग टू पे गुड मनी फॉर इट, एंड आई कैन स्टे देयर एंड आई कैन गेट अ रिन्यूअल फॉर लाइक 5 years. Which is like काफ़ी hard to wrap my head around, because परसों तक इसका कोई प्लान नहीं था कि मैं यूरोप में कभी भी एंड अप करूँगा, एंड नाउ आई हैव लाइक एन ऑफर टू गो. आई मे नॉट गो दिस ईयर, एंड द रीज़न इज के कल रात को जिससे अब्बा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एंड अम्मा हैड टू ड्राइव हिम ऑल द वे बैक फ्रॉम भवाली. हम लोग भवाली वाले घर में गए थे, एंड उनकी तबीयत वॉज नॉट very very nice, and that was like a difficult moment for all of us, right? Because even though I may not show it, I care about him a lot, and I do not want to be in a situation where something happens to him and I'm not able to make it in time, for the lack of a better word. One of my friends who is currently abroad, I do not want to say the name, recently lost their Nana, and I mean they couldn't come back, and they were really sad about it, and that got me thinking that when Mamu passed away, so that was a similar complaint from my cousins as well, that they couldn't appear in time. And how much do you value the degree, the stupid degree? Would you ever trade your last moments that you're going to spend with your family member for an Oxford ki degree or a Stanford ki degree? I don't think you will. I don't think you ever will do that knowingly, consciously. And if there is even a small chance that this might be a possibility, though I would rather not go. And as far as I think I may be passing up on the Spain wala offer, because at least अभी तो मैं इसी हिसाब से सोच रहा हूँ. I'm not very sure कि मेरे पेरेंट्स किस हिसाब से सोचेंगे, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को अभी तक सही तरीके से इसके बारे में बताया भी नहीं.
like I've told them, but it's in very passing. Like, so they were also confused कि ये क्या हो गया एकदम से. I think मेरे parents are like fed up of me coming up with new ideas all the time, because like I come up and I'm like, देखो मेरे पास एक scheme है, ठीक है. That's how that conversation usually goes. Okay, I just come up to them with like decisions, and I think they should perhaps be more involved in the decision making process, because they at least deserve that much. And so ये एक छोटा सा update था on that end. तब से मैं वापस आया, मैं यही सोच रहा हूँ कि सब like how much of this is luck. I mean, you can say कि हाँ ठीक है SGS में I got selected, but that is actually कहीं ना कहीं luck as well, right? Like सबूर भाई ने मुझसे कहा था कि SGS में apply with Abdullah, there is genuine scope वहाँ पे तुम्हारे लिए, and I did, and then I get selected, right? And वो सब होने के बाद I think I get selected, and then I give the IELTS in the first place, right? And I could have applied क्योंकि मेरे पास पुराना IELTS था, लेकिन अब वो एक्सपायर हो गया होता, लेकिन जब तक एप्लीकेशन की विंडो थी तब तक वो एक्सपायर नहीं हो रहा था. सो आई कुड हैव सेड कि यूनिवर्सिटीज़ को मैं कह देता कि मैं दूसरा IELTS नहीं देना चाह रहा हूँ एट दिस करेंट मोमेंट, क्योंकि मेरे पास वैसे ही काफ़ी ज़्यादा काम था. बट आई कुड हैव सेड कि मैं दूसरा IELTS नहीं देना चाहता, यही मेरा करंट वाला IELTS एक्सेप्ट कर लें. बट आई डिडंट लकीली से दैट, एंड आई गिव द IELTS. एंड उसके बाद वो सब जो हुआ वो हुआ. बीच में कुछ लेटेंट पीरियड, फिर मैं आसिफ भाई आ गए, आसिफ भाई मुझे पकड़ के ले गए किडनैप करके अलीगढ़ तक, और वहाँ पे मैं और सभी तो सो गए थे. देखो पहुँचते ही मतलब अगले दिन की रात का वक्त था, एंड वी वर लाइक डेड टायर्ड. सैटरडे की रात का वक्त था, वी लाइक डेड टायर्ड एकदम. तो हम लोग बस लेटे हुए सो रहे हैं, एंड वी हैव टू गो फॉर डिनर, लेकिन हमारा पेट थोड़ा सा भरा हुआ है क्योंकि हमने थोड़ा सा खा लिया था. सो वो सब भी चीज़ें चल रही हैं. And like none of us want to actually go when he calls us, but we still go, and then this conversation even happens in the first place. So how much of this is luck, if you think about it? I think कि आप जो चाहते हैं ना आपको अल्लाह दे देता है. That is one of my genuine beliefs. क्योंकि अभी तक मैं 6 साल से मैंने तो यही देखा है कि मैंने जो चाहे मुझे मिल गया. I wanted to lose weight, I got it. I wanted women, I got them. I wanted a new MacBook, I got it. I wanted a new iPhone, I got it. I wanted anything in my life, I got it. I wanted Jamia, I got it. I wanted to travel abroad, I did. And I wanted to travel through Zada, I did. I wanted to earn money, I did. There is no end to a man's wishes. Luckily, there is no end to God's treasures as well. So that's something that's always at the back of my head. कि अगर आपका if your worth, your worth as a man is not measured by how much you have, because you will always have it, because God will always give it to you. ये मेरा एटलीस्ट मेरे साथ तो है. तो इफ गॉड विल ऑलवेज गिव इट टू यू, देन हाउ आर यू जज्ड? एंड आई थिंक द आंसर इज कि यू आर जज्ड आफ्टर यू हैव रिसीव्ड इट एंड बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट, राइट? ये बहुत डीप लग रहा है सुनने में, लेकिन एक्चुअली एज सून एज आई सेड इट मुझे रियलाइज हुआ कि भाई दो ही तो ऑप्शन है, या तो तुम्हें नहीं मिला या तुम्हें मिल गया है. तो व्हाट इज दिस? तो आई थिंक द थिंग दैट आई एम गोइंग टू से इज के हाउ पेशेंट आर यू बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट, एंड हाउ ग्रेटफुल यू आर आफ्टर यू हैव रिसीव्ड इट. तो both of these things कहीं ना कहीं are important, because मिल सबको जाता है. I'm saying this on camera and this will be uploaded. I will have more than enough money in my life because I want it, and I've genuinely asked Allah for it, and that's the reason it's going to come. It may not come today, it may not come next month, it may not come in the next 6 months, but I assure you one day I will have more than enough money. I'll have crazy stupid lots of money, and it wouldn't be that exciting though. It's only as exciting क्योंकि अभी मेरे पास वो नहीं है. It's only exciting क्योंकि अभी मैं इस रूम में रह रहा हूँ. One day this room would be supremely बड़ा. I would have like luxurious cars and everything, and they won't be exciting. I know they won't be exciting. Or at least I would have the ability to get them. लेकिन वो इतना कम मुझे excite कर रही होंगी कि I wouldn't even buy them. So that's how life is. As soon as you get it, you don't want it anymore. At least that's how life as a man is. As soon as you get something, you want the next best thing. तो कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि इट्स एन एंडलेस लूप ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट. अल्लाह कभी फुलफिल करना बंद नहीं करता, आप कभी विश करना बंद नहीं करते. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. उप्स, कॉल भी आ गया.